Okay, so let us start with today's session by quickly revising what we have learned in the last session. अगर आपको याद होगा तो last session में we derived an equation for orbital magnetic moment of an electron. So we have considered an electron revolving around nucleus और ये जो इलेक्ट्रॉन है it possesses orbital magnetic moment, not orbital angular momentum. It has orbital angular momentum as well, लेकिन it behaves as if it is a small current loop, which means it has magnetic dipole moment. Okay, and it has orbital magnetic moment, which was given by ex upon 4 pi me into n, and this was called as Bohr magneton. So this is Bohr magneton. Okay. So यहां तक आपको पता होना चाहिए first of all, and then after this we have discussed that when you measure magnetic moment experimentally, तो experimental value जो आती है denoted by small m, capital M, doesn't matter. So let us denote it by small m. Experimental value जो आती है it happens to be greater than ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ऑर्बिटल मोशन से जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलना चाहिए उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलता है. सो वी से दैट इन एडिशन टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन आल्सो पोजेस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट. देन वी सॉ, अभी देखो आइडिया ये था कि अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो हर एक मटेरियल मैग्नेटिक होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इफ दे पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऑल द मटेरियल्स इन दिस वर्ल्ड शुड बी मैग्नेटिक, पर ऐसा होता नहीं है. सो फॉर दिस, टू एक्सप्लेन दिस कि ऐसा क्यों नहीं होता है, व्हाई नॉट every material is magnetic in nature, so you have to take into consideration Pauli's exclusion principle. तो अगर आपको याद होगा हमने कल Pauli's exclusion principle डिस्कस किया था, and Pauli's exclusion principle tells you no two electrons can have same values of set of वो जो 4 क्वांटम नंबर थे कौन कौन से, n, then L, Ml and Ms. तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, even though if they belong to the same orbit, they cannot have same values for all this 4 quantum number. For example, if I take helium atom, I have 2 electrons in the first orbit, तो दोनों के लिए n की वैल्यू 1 और L की वैल्यू डिपेंड करती है n की वैल्यू पे. it goes from 0 to n minus 1 or something, you need to check. Okay, तो आप माइनस एन टू प्लस एन या फिर 0 टू n प्लस 1 n माइनस 1, यू नीड टू चेक. ओके, आपको चेक करना है. तो L की वैल्यू विल बी द सेम. अगर L की वैल्यू सेम है तो Ml की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज Ml एज यू रिमेंबर वाज फ्रॉम L minus 1 to L plus 1. तो for the two electrons in the first orbit you have n value, L value and Ml value same. But according to Pauli's exclusion principle, अगर ms की वैल्यू भी सेम हो गई तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में है. एक ही स्टेट में मतलब दे आर एट द वन प्लेस ओनली. तो बाय द वे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यू कैनॉट हैव ऑल द 4 वैल्यूज सेम, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ. तो एक का स्पिन स्टेट इज पॉइंटिंग अपवर्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट इज पॉइंटिंग अप एंड दूसरे का पॉइंटिंग डाउन, राइट. तो दैट इज व्हाई दीज टू स्पिन स्टेट्स कैंसल आउट ईच अदर, और कैंसलेशन की वजह से देयर इज नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, राइट. तो व्हाट हैव यू लर्नड कि जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, there will be no magnetic moment, no residual
magnetic moment, no left over magnetic moment, so there is cancellation, net magnetic moment is 0, right? तो एक बार वापस बता रहा हूं, you have shown that each a single revolving electron has magnetic moment. कौन सा? orbital magnetic moment, which is Eh upon 4 pi me into n, where Eh upon 4 pi me is Bohr magneton. Okay, so this is Bohr magneton. Then when you experimentally measure, ये theoretical value है, this is theoretical value. When you experimentally measure, experiment से जो value मिलती है, it happens to be greater than theoretical value of orbital magnetic moment. इसका मतलब वहां पे और एक contribution आ रहा है, which we say that comes from electron spin, but electron is not spinning. There is something intrinsic. ये electron का intrinsic value है, that's it, plus or minus half. Okay, so according to Pauli's exclusion principle, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम, they cannot have the same values for all these 4 quantum numbers. इसकी जरूरत क्या पड़ी, पहले वो समझ लो. द आइडिया इज, जब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो हर एक मटेरियल मैग्नेटिक होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल में अल्टीमेटली एटम्स है और एटम्स आर रिवॉल्विंग, राइट? बट ऐसा होता नहीं है. प्लास्टिक इज नॉट मैग्नेटिक इन नेचर. यू हैव मेनी मटेरियल्स व्हिच आर नॉट मैग्नेटिक इन नेचर. तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. यू से दैट चलो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन एमएस की वैल्यू सेम नहीं है. मतलब जब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर, तो दिस एमएस वैल्यूज दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो नेट मोमेंट विल बी 0, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी 0. तो यहां तक हमने कल देखा था. सो लेट अस गो अहेड विथ next topic, that is magnetization and magnetic intensity. Magnetic intensity we will be covering in a while. तो पहले magnetization क्या होता है? See, the idea is, now you already know electrons have magnetic dipole moment. Okay, तो जब bulk material बनेगा, bulk material just like a rod of iron or rod of any other material, whenever you have bulk material, ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है. सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट्स में add up and give you non-zero net moment. Each electron has dipole moment, magnetic dipole moment given by this equation. अब ऐसा है कि जो इनर शेल्स होते हैं, इनर ऑर्बिट्स जो होते हैं, दे आर फिल्ड. और फिल्ड मतलब यू नो हाउ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 18. तो पहले में 2 मतलब इवन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिलेशन. फिर 8 मतलब इवन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के 4 पेयर बनेंगे, कैंसिलेशन. 18 कैंसिलेशन. सो व्हाटएवर magnetic moment is coming from the valence shell, last orbit. Okay, अब ऐसा हो सकता है कि लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो. वो केसेस इन डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक बल्क मटेरियल है. अब बल्क मटेरियल में हर एक एटम के पास, और एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन से आएगा. ओके, so whenever there is formation of bulk material, it may happen, or it happens actually, that this vectors, कौन से vectors? dipole moment के vectors. This dipole moment, magnetic dipole moment, add up to give you non-zero magnetic moment. मतलब cancellation नहीं हो रहा है, in short. तो per unit volume में how much is the net dipole moment per unit volume? Because when you make a material, हो सकता है मैंने एक क्यूब ले लिया, उस क्यूब का टोटल वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब. ओके, एंड आई वांट टू नो हाउ मच डायपोल मोमेंट इज देयर इन 1 मीटर क्यूब. यूनिट वॉल्यूम में कितना? आई एम गोइंग इनटू डेप्थ अगेन. इजी है, टॉपिक इज वेरी इजी. If you make a material, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, मे बी 8 मीटर क्यूब, मे बी 10, मे बी 100, I don't care. So definitely, if this material is magnetic in nature, so it will have
dipole moment. How much net dipole moment is there per unit volume? Unit volume में कितना net magnetic moment है, magnetic dipole moment है, that is called as magnetization of the sample. Simple, right? So better I also note this down. Okay. So when a bulk material is formed, magnetic dipole moments add up. ये this is important. Add up vectorically. क्योंकि जब add up बोलोगे तो सिर्फ addition ही होगा, cancellation नहीं होगा. But when you say vector addition, you may also get 0. Okay. So add up vectorically, and they can give non-zero magnetic dipole moment. They can give non-zero net magnetic dipole moment. Non-zero net magnetic dipole moment. Okay. So net dipole moment or net magnetic dipole moment, net magnetic dipole moment of a sample per unit volume is called as magnetization. तो कितना पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट है? नेट मतलब वो वेक्टर एडिशन होने के बाद, आफ्टर दिस स्मॉल डायपोल्स, tiny magnets, they are adding up, and if they are giving you something resultant, something मतलब non zero, और डेफिनेटली अगर जीरो हो गया तो मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, तो फिर मैग्नेटाइजेशन की बात क्यों करेंगे? अगर मटेरियल ही मैग्नेटिक नहीं है तो व्हाई विल यू टॉक अबाउट मैग्नेटाइजेशन? ओके, सो दिस डायपोल मोमेंट्स में have something left over, resultant may be zero, non-zero resultant moment per unit volume is magnetization. It is denoted by mz, denoted by m suffix z, right? So by definition आपने define किया net dipole moment per unit volume, so therefore magnetization mz is m. What was m? You remember? Dipole moment. Okay, तो dipole moment per unit volume, ये आ गया आपका magnetization. Okay, then let us find out what are SI units and dimensions. Dimensions of MZR, आपके बुक में सिर्फ कैपिटल M यूज किया है. I prefer to have MZ. Okay, because sometimes हम M directly dipole moment के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो I prefer to have M suffix Z. So anyways, how do you find out dimensions of MZ? Dimensions of dipole moment upon dimensions of volume. So do you remember dimensions of dipole moment? How did you reach to this equation? Starting point क्या था? I into A. Each revolving electron behaves like a small magnet and has dipole moment which is given by current into area. तो ये current into area, current के dimensions a raised to 1. Some books will use I raised to 1. ये ampere है current. Okay, a raised to 1, और area is L square, volume is L cube. Cancel and cancel, मतलब A1 L minus 1. So dimensions are A1 and L minus 1. And SI unit यहीं से मिल जाएगा. SI unit of MZ is current upon length, ampere per meter. Ampere per meter, right? Simple, extremely simple. Okay, तो अगली बार से कोई क्वांटिटी में एम्पियर पर मीटर दिखे तो समझ लेना इट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू कि समझ लो अच्छे से कितना रिजल्टेंट
नॉन जीरो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटाइजेशन. ओके, बिकॉज नाउ we want to derive an equation for total magnetic induction at the axis of a toroid. याद है आपको लास्ट चैप्टर में what you did was you took a toroid. जिनको टोरॉइड ही नहीं पता उनके लिए एक रॉड है, इस पे यू हैव वाइंडिंग्स, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें से आप करंट पास करते हो. बाय द वे इस स्ट्रक्चर को बोलते हो सोलेनॉइड, राइट? एंड देन यू पास अ करंट थ्रू सोलेनॉइड and this current generates a magnetic field at the axis which was given by mu 0 small n I, where small n was number of turns per unit length. okay, तो इसी को अगर आप एक डोनट शेप दे देते हो, if you give this as the shape of donut, okay, तो something like this, ये डोनट शेप है. okay, then इस पे भी there are windings, और इस वाइंडिंग में से जब आप करंट सर्कुलेट करोगे तो इसके एक्सिस पे, टोरॉइड के एक्सिस पे देयर विल बी मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, इफ यू रिमेंबर, हमने इस एक्सिस का जो रेडियस था दैट वी टुक एज एवरेज रेडियस आर, क्योंकि इसका इनर रेडियस आर आउटर और इनर, दिस इज इनर रेडियस, और इसका एक आउटर रेडियस भी था आर आउटर या आर ओ. टोरॉइड है, इट इज थिक, ठीक है, तो अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस. फिर हमने बोला था कि ये जो एक्सिस है इसका टोरॉइड का, उसका एवरेज रेडियस क्या होगा, r1 प्लस r2 बाय 2. तो वो जो एवरेज रेडियस था, एवरेज रेडियस वी डिनोट बाय r, तो ये एवरेज रेडियस इज गिवन बाय r. ओके, तो व्हाट इज टोरॉइड? अ सोलेनॉइड bent in the shape of donut, right, with average radius r. Now if you remember, हमें फाइंड करना था मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे, एक्सिस पे. एक्सिस मतलब ये ग्रीन लाइन. एंड अगर आपको याद है टोरॉइड के केस में टोरॉइड का एक्सिस और एम्पेरियन लूप एक ही जगह पे आता है, इट कोइंसाइड्स. ओके, देन दिस इज आल्सो योर एम्पेरियन लूप, द लाइन इन द ग्रीन सर्कल इज आल्सो एम्पेरियन लूप. देन एम्पेरियन लूप लेने के बाद एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस एक्सिस ऑफ द टोरॉइड. डू यू रिमेंबर द इक्वेशन? mu 0 n I अगेन. सिर्फ यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 pi r आता है, दैट्स इट. ओके, राइट, याद है ये लास्ट चैप्टर, ये याद होना चाहिए, नहीं तो अगला कुछ नहीं समझेगा. So you need to remember this, that whenever you have toroid and if there is current, क्योंकि B equal to mu 0 n I, जब करंट ही नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि आपके पास एक टोरॉइड है और टोरॉइड में से आपने करंट सर्कुलेट किया है, वो करंट एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है. मैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय mu 0 n I, number 1. So B equal to mu 0 n I. We will write again in a proper way, but for the time being समझ लो. There in that chapter हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला था कि जो टोरॉइड का मटेरियल है, जैसे सोलेनॉइड लिया था हमने, सोलेनॉइड का मटेरियल होगा सम मटेरियल. वायर का एयर में तो हम वाइंड नहीं कर सकते ना, इट हैज टू बी सम बेस मटेरियल. तो नोवेयर वी मेंशन्ड कि ये बेस मटेरियल का नेचर क्या है, ये मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, राइट? वी हैव नॉट डिस्कस्ड, बट नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स, the base or the core of this toroid is magnetic in nature. Magnetic in nature मतलब it has magnetization, मतलब there is net magnetic moment per unit volume, right? तो अब जब खुद मटेरियल भी मैग्नेटिक है और करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अब दो होंगे. एक होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट, दूसरा होगा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द मटेरियल इटसेल्फ. तो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है, वेल दैट
magnetization due to material, okay, and this is due to current. तो material का जो magnetization होता है, magnetic induction होता है, it is proportional to magnetization. The magnetic field at the axis of toroid due to material is proportional to magnetization of the sample. जितना ज्यादा dipole moment per unit volume, उतना ज्यादा contribution material के magnetic field से, intrinsic magnetic field से. Okay, so if you remove sign of proportionality, you will be writing down a constant which is mu zero. Mu zero is called as permeability of free space, right? Equation number 2. So in this case, total magnetic induction at the axis of the toroid will be induction due to current plus induction due to material, magnetic induction due to material. Okay, so this is equal to mu zero Ni plus mu zero Mz. Mu zero common, Ni plus Mz, right? अब ये जो N into I है, this is number of turns per unit length into current. इसको आप बोलते हो magnetic intensity, right? तो what is this magnetic intensity? It is nothing but magnetic induction due to current. तो magnetic field का जो current की वजह से जो contribution है, that is called as magnetic intensity. See, the problem is, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा कुछ किया नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से ही आएगा, सिंपल. इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, you may get contribution of magnetic field from two different sources. One is the current and other is the material, right? Correct? अब दोनों ही magnetic induction है, both are the magnetic induction, right? तो सिर्फ नाम चेंज कर दिया, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, the contribution from current will be called as magnetic field intensity. It is same if you remember electric field intensity. तो वैसे ही है ये magnetic field intensity. It is just because this is contribution from current. If I turn off the current, there is no Ni, मतलब there is no contribution from current. So in that case, you will get induction at the axis of toroid only due to material. अगर material भी non-magnetic होगा तो nothing. You have nothing left over. Okay. So, but Ni is called as H. H क्यों? क्योंकि B से डिनोट करूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए नया नाम H, नया सिंबल H. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या जस्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक ही बात है, राइट? एंड बाय द वे यू कैन आल्सो डिराइव यूनिट्स ऑफ दिस. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर अपॉन लेंथ, नंबर अपॉन मीटर, और I is current, एम्पियर पर meter. Good. Then therefore total magnetic induction will be mu zero n I की जगह पे H plus mz. Okay, now we want to define a new parameter. हमको एक नया पैरामीटर डिफाइन करना है अब, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक susceptibility. What is this new parameter? So this, first of all, is denoted by chi. This is chi. Okay, it is the ratio of magnetization of the sample to that of magnetic field intensity. So the ratio of magnetization to that of field intensity, magnetic field intensity, is called as magnetic susceptibility. वो आपको सिर्फ इतना ही बता रहा है. What was mz? Magnetization, लेकिन it comes from material, intrinsic property of material, और H comes from current. So it is just telling you what is the contribution from material and current. So it is the ratio of magnetic susceptibility is the ratio of magnetization of the sample to that of magnetic field intensity, right? Therefore, you will have mz in terms of susceptibility as chi into
H, right? Then ये जो आपके पास इक्वेशन है B इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस chi H आ जाएगा ये, so this will be H plus chi H, right? Then you can take out H common and you will be getting this equation for magnetic induction at the axis of the toroid. Okay, then ये जो 1 plus chi है, 1 plus susceptibility, इसको आप बोलते हो relative permeability. So this is called as relative permeability, but 1 plus chi is called as mu r, which is nothing but relative permeability of the medium, of the material of toroid. Relative permeability. Okay, so therefore you will have B is equal to mu zero mu r into H, right? अब ये जो mu zero mu r है, इसको आप बोलते हो absolute permeability of the medium, क्योंकि this is permeability of free space into permeability of medium, relative permeability of medium. This is called as in general mu. So B is equal to mu H, where this mu, which is mu zero into mu r, is called as absolute permeability of the medium. Absolute permeability of the medium, of the material also, right? So now finally you have a relation between total induction at the axis of toroid and field intensity. Okay, this is very important, बहुत काम में आएगा आगे. So what we have done so far is, I will definitely repeat all this. हमारे पास टोरॉइड था, टोरॉइड के ऊपर वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स में से जब करंट सर्कुलेट करोगे तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट मैग्नेटिक field induction at the axis of toroid given by mu zero Ni. But in addition, if the core of the toroid, जिस पे आपने वाइंडिंग किया है और जो बेस मटेरियल है, अगर वो भी मैग्नेटिक हुआ तो there will be magnetization of the sample also. तो उसका भी contribution होगा at the axis, which is given by mu zero into magnetization. Obviously, it should be proportional to magnetization, क्योंकि जितना ज्यादा dipole moment per unit volume उतना ही ज्यादा magnetic होगा material in nature. So total magnetic induction at the center will be Bi plus Bn. So Bi is mu zero Ni plus mu zero Mz, mu zero common Ni plus Mz. But ये जो Ni है इसको हम लोग बोलते हैं magnetic intensity, right? It just tells you that this is the contribution to the magnetic field at the axis due to current, right? क्योंकि दो कंट्रीब्यूशन है, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सटर्नल है ड्यू टू करंट. ओके, सो यू विल हैव म्यू जीरो H प्लस Mz. अब एट दिस स्टेज हम लोगों को देखो इशू क्या है, कभी भी फिजिक्स में इक्वेशन ऐसा डायरेक्शन लेस इक्वेशन नहीं आता है आपके पास. व्हाई? यू सी फाइनल इक्वेशन यू हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ H डिपेंड्स ऑन I, राइट? मुझे अगर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना होगा मटेरियल का, तो व्हाट इज बेटर इज टू पुट हैव अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज. कैन यू मेजर करंट? यस, यू कैन मेजर करंट, ऑफ कोर्स यू कैन मेजर करंट. ओके, और म्यू वैल्यू पता होती है मटेरियल की. फॉर दिस मटेरियल म्यू इज दिस, फॉर दैट म्यू इज दैट. ओके, करंट एंड यू कैन मेजर. कैन यू मेजर मैग्नेटाइजेशन? आपके मटेरियल के अंदर जाके चेक करोगे कितना है पर यूनिट वॉल्यूम डायपोल मोमेंट. यू डोंट डू दिस, यू कैन नॉट गो इनसाइड मटेरियल. हाँ, मैं यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूँ, उसमें इतना मोमेंट है, मतलब मैग्नेटाइजेशन इतना है, फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर मैं n की वैल्यू डालूंगा एंड देन आई विल गेट फाइनल आंसर, राइट? तो ऑलवेज यू नीड टू मेक इक्वेशंस व्हिच जो भी पैरामीटर उसमें इन्वॉल्व है, दोज आर मेजरेबल पैरामीटर्स. फिजिक्स का 11 का पहला ही चैप्टर का पहला ही स्टेटमेंट था, physics is a subject where you do measurements. Okay, so ये जो mz है, I don't want this in my equation. So we define something called as magnetic susceptibility, which is the ratio of
मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन इज काई इनटू एच, ससेप्टेबिलिटी इनटू एच। तो mz की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे काई एच, यू विल टेक आउट h कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ म्यू 0 1 plus chi and h। 1 plus chi को आप बोलते हो mu r, which is relative permeability of the medium of the material। okay, then you will get b equal to mu 0 into mu r h, right। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी याद होगा, अगर याद होगा तो you will quickly realize epsilon 0 k was called as epsilon, या फिर k डायरेक्ट कांस्टेंट, इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखते हो। इट्स द सेम, एग्जैक्टली द सेम, एप्सिलॉन 0 म्यू 0, एप्सिलॉन r म्यू r, सेम। वहां पे एप्सिलॉन को बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहां पे आप म्यू को बोल रहे हो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके, गुड। सिर्फ ये डिनोमिनेटर में आता है वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। गुड। So finally you will have equation for total magnetic induction in terms of absolute permeability and in terms of magnetic intensity। all right, so let us once again quickly write down little bit of theory and revise। तो आपके पास जो सिस्टम है सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना सीखो। फर्स्ट स्टेप इज टू डिस्क्राइब द सिस्टम एंड फिजिक्स इज नथिंग, बहुत सिंपल है। क्या है आपके पास? टोरॉइड। ओके, टोरॉइड पे क्या है? वाइंडिंग्स। कितने वाइंडिंग्स? n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो कंसीडर अ टोरॉइड विथ एवरेज रेडियस r, having n turns per unit length, let I be the current flowing through the windings। We know that, what do you know magnetic induction due to this current is? We know that magnetic induction along the axis, कहां पे वो मेंशन करना पड़े, कहां पे? यहाँ पे करंट है, कहां देख रहे हो आप? magnetic induction axis पे। so magnetic induction along the axis of toroid is given by क्या था? bi, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम करंट, इसको सिर्फ मैं डिनोट bi से कर रहा हूं, bi इक्वल टू म्यू 0 ni। पिछले चैप्टर में सिर्फ बी बोला था क्योंकि वहां पे जो कोर था, बेस था, वो मैग्नेटिक है नहीं है हमने बात नहीं की, तो वो अजम्पशन था कि मैग्नेटिक नहीं है, राइट। तो बी आई, ओके, इक्वेशन 1, राइट। बट द बेस of the toroid has net dipole moment per unit volume, मतलब मैग्नेटाइजेशन है वहां पे per unit volume। therefore magnetic induction due to the material of toroid is, मैं ऑफ toroid लिखने रहा हूं, is b suffix m equal to mu 0 mz, right। but लिख देना where mz is magnetization, where mz is magnetization of the sample। okay, हो गया। so then you will say therefore total magnetic induction along the axis is given by
is B equal to Bi plus Bm, which is equal to mu 0 Ni plus mu 0 Mz. Mu 0 you can take out common, Ni plus Mz. Okay, but Ni is equal to H, which is called as magnetic intensity or magnetic field intensity, right? ये आ गया आपके पास in terms of H आ जाएगा आपका इक्वेशन यहाँ पे. Therefore B equal to mu 0 H plus Mz. After this step, you need to define what is susceptibility. So let us define magnetic susceptibility as susceptibility as the ratio of magnetization to that of field intensity to that of magnetic field intensity. Because I am lazy, I will write only magnetic intensity. Okay, it is denoted by chi. उसके सिंबल को बताना पड़ेगा क्योंकि this is the first time you are introducing this Greek letter chi. Okay, therefore you have chi equal to mz upon h. इसको एक नंबर दे देते हैं, नंबर 2. So from here you will have magnetization mz equals to chi h. Equation number 3. Substitute 3 in equation number 2. Okay, so substitute equation number 3 in equation number 2. What you will get is B equal to mu 0 H plus chi H. Therefore, B equal to mu 0 1 plus chi into H. Okay, but 1 plus chi is called as mu r, which is relative permeability of the material, and therefore you will have B is equal to mu 0 into mu r into H. But mu 0 into mu r equal to mu, which is nothing but absolute permeability of the medium. Absolute permeability of the material, वो आप लिख लो, and therefore you will have B equal to mu H. Done. So this is what you need to know. Okay, now हमें magnetic properties of different materials study करना है. So what we can do is, for example, जैसे मैंने आपको बताया, you may have some materials which are not magnetic in nature, लेकिन electrons तो सबके पास ही है, right? तो what happens when you keep any material inside external magnetic field? हमारे पास एक external magnetic field है, उस magnetic field में हमने sample को रख दिया, तो उस केस में if the material is showing magnetic properties or not, depending on that we can classify, categorize materials into 3 categories, right? What I am saying is, definitely कुछ materials के पास net dipole moment per unit volume होगा, they are intrinsically magnetic in nature, जैसे iron, right? जैसे I think copper, okay? But there are some materials which does not have net dipole moment, मतलब they are non-magnetic in nature, but even then it may happen कि जब आपने उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, it
shows some temporary magnetism. Okay, तो क्लासीफाई करते वक्त instead of directly classifying कि हाँ this doesn't have net dipole moment so non-magnetic, it has dipole moment so magnetic, instead of directly classifying you keep any material inside external magnetic field. उस केस में what is the behavior, depending on that you can classify materials. Okay, so magnetic properties of materials में हमको इतना ही देखना है कि what happens when you keep material inside external field. So when you keep material inside external field they may show magnetism. और कौन सा material कितना magnetic, it is given by the value of chi, magnetic susceptibility. So you classify, details we will take tomorrow, of course. I'm just introducing the concept now. So what happens is you may have three categories depending on the value of chi. अगर chi की वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल होगी from 10 power minus 3 to 10 power minus 2, minus 10 power minus 3 to minus 10 power minus 2, मतलब minus 0.001 से minus 0.01 तक, right? If the value of susceptibility is negative, क्योंकि negative है, and small, then such materials will be classified as diamagnetic materials. Diamagnetic, and these diamagnetic materials are basically temporary magnets. They show magnetism only in presence of external magnetic field. जब आपने इनको external field में रखा तभी ये magnetic properties show करेंगे. So these are called as diamagnets. Diamagnetism, right? Then, if the value of chi is positive but small, from 0 to 10 power minus 3, 0 to 0.001 पॉजिटिव के साथ, ऊपर नेगेटिव था ये पॉजिटिव. ओके, देन such materials are also temporary magnets and they are called as paramagnets and the property is called as paramagnetism. Diamagnets are weakly repelled by external field. मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ जाएंगे. सो दे आर रिपेल्ड. मतलब डू यू रिमेंबर हाउ डू यू डिनोट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स? 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिफाइन किया था. एक था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यू ऑलवेज शो विथ इक्वल, मतलब पैरेलल एरोज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. इसका मतलब क्या, अगर मैं ए पॉइंट पे फील्ड मेजर करता हूं तो उसका वैल्यू और डायरेक्शन, बी पे मेजर करता हूं तो उसका वैल्यू और डायरेक्शन, सी पे मेजर करता हूं तो उसका वैल्यू डायरेक्शन इज सेम. सो व्हेन a field, electric field, is same at every point, then such a field is called as uniform electric field and it is symbolically represented by parallel vectors because electric field is a vector quantity. तो magnetic field को भी आप वैसा ही कर सकते हो. If the magnitude and direction of magnetic field is same everywhere, then it is called as uniform magnetic field. And you can denote it by parallel vectors of the same magnitude. अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहां मेजर किया, आई गेट सम वैल्यू इन सम डायरेक्शन. आई मेजर्ड इन अनदर पॉइंट, आई गेट द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड. आई मेजर हियर, आई गेट सेम डायरेक्शन बट इवन ग्रेटर मैग्नीट्यूड. दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स. वन वे. अदर वे इज, तो यहाँ पे क्या अलग है? डायरेक्शन. डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड. वेरी गुड. तो यहाँ पे डायरेक्शन इज सेम बट अदर वे राउंड इज आल्सो पॉसिबल. यू मे हैव, आपको ऐसा भी मिल सकता है दैट मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर बट डायरेक्शन इज डिफरेंट.
So you can also have something like this. This is also non-uniform magnetic field. Same magnitude, wherever you measure the value is same but direction is different. तो दोनों भी different हो सकते हैं. You may also have direction also different and magnitude also different. That is also a case of non-uniform magnetic field. तो जब मैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, आई जस्ट सेड कि जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल विल बी वीकली रिपेल्ड, मतलब दे टेंड टू गो अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन्स टू द वीकर रीजन. मतलब क्या? मतलब ऐसा, सपोज इमेजिन ये एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ओके, देन you have something like this, okay. So definitely this is stronger region of the field, okay, and this is weaker region of the field, right. तो अगर मैंने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ पे रख दिया होता तो it will move from stronger to the weaker region. So they are weakly repelled. Okay, right? Paramagnetic. They are also temporary magnets. They show magnetism only in presence of external field. But इसके केस में उल्टा है. They are weakly attracted. Okay, उनका attraction जो है it is weak attraction, and they go from weaker regions of the field to the stronger regions of the field. Right? Then last case, if the susceptibility is positive and very high, from 10 power 2 to 10 power 3 or 4 भी हो सकता है यहाँ पे, okay, such materials are called as ferromagnets and the property is called as ferromagnetism, right. And normally they are strongly attracted by external field and they are permanent magnets. तो जो काले कलर का सब्सटेंस आप लाते हो, that is this ferromagnets. They are permanent magnets. Okay, so that much is sufficient for today. We'll continue with more in the next session.